fire that ripped through flourished days in Delhi's Malviya Nagar on 3rd of June will be remembered as one of the capital's deadliest fire tragedies in recent years. 21 lives were lost as flames and thick smoke engulfed the bed and breakfast establishment, trapping guests inside rooms and corridors with little time to escape. Let's take a closer look at this tragic incident. Well, hello and welcome to yet another episode of Deep Dive brought to you by NewsX. I'm Megha Sharma, and today we take a look at the incident that has rocked the national capital and the entire country. Most of the people that were staying at the property were in Delhi for medical treatments, while others were travelers who were passing through the city. As the blaze intensified, panic spread floor by floor. Guests rushed to windows, climbed onto ledges and balconies and desperately searched for a way out as smoke filled the building. What unfolded over the next few hours was a story not just of tragedy, but also of extraordinary courage. Long before many knew the scale of the disaster, there were ordinary residents, the locals of Malviya Nagar, who began running towards the building. They were not firefighters or trained rescue personnel. They were local shopkeepers, laborers, vendors, residents and passers-by who suddenly found themselves confronting a life and death situation. Faced with people screaming for help from the floors of this building, they made a split-second decision that would define the day. They chose to help. Eyewitnesses described scenes of chaos unlike any other that they had seen before. Thick black smoke poured out of windows as trapped guests cried from their balconies. Some people, convinced that they would be consumed by the flames if they stayed inside, prepared to jump. On the ground below, local residents scrambled to create makeshift rescue arrangements. Mattresses were dragged into the street. One of the most crucial rescue measures came from a local businessman, Riazuddin, who owns a mattress shop nearby. Resident Sanjay Goyal Arman stated, and I quote, that we spread the mattresses on the road and encouraged people to jump. He did not think about the loss to his business. His only concern was saving lives. A 20-year-old who runs a mattress shop in the area said that he supplied around a dozen mattresses and several bed sheets during the rescue. As per the report, ropes were brought in from nearby homes and shops. Bricks were stacked against walls to help rescuers climb higher. Human chains were formed. Every available hand became part of an improvised rescue operation. One of the most striking aspects of the rescue effort was how completely unprepared the volunteers were. They had no helmets, no breathing apparatus and no protective equipment. Yet many repeatedly moved closer to the building structure despite the danger posed by flames, falling debris and dense smoke. Witnesses recounted seeing residents stretch mattresses beneath the windows to soften their falls, while others stood ready to catch or support those attempting desperate escapes. Some rescuers rushed forward to pull the survivors away from the building seconds after they hit the ground. Others carried the injured to waiting ambulances or nearby safe areas. Several accounts from the scene speak of remarkable acts of bravery. Residents reportedly cut through window grills to create escape routes for those trapped inside. Others climbed onto the adjacent structures to reach guests stranded near the windows. In some cases, rescuers physically guided terrified occupants down makeshift rope arrangements. There were also reports of bystanders administering first aid and CPR to victims pulled from the building. The rescue effort became a community operation in the truest sense of the word, with strangers working together under immense pressure and without any certainty about their own safety. The courage displayed by civilians was matched by that of emergency responders and police personnel. Delhi police officers entered smoke-filled sections of the building as rescue operations intensified. According to official accounts, several police personnel suffered injuries during the operation, including burns and smoke inhalation. They continued evacuating occupants despite the risks posed by the rapidly evolving fire. The firefighters meanwhile battled difficult situation as they attempted to reach those trapped inside and contain the spread of the blaze. What makes these stories especially powerful is that many of the rescuers had no connection whatsoever to the people that they were trying to save. They did not know their names, where they came from or why they were in Delhi. They simply saw fellow human beings in danger. In the middle of confusion, fear and uncertainty, instinctive acts of compassion took over.
Again and again, people chose to move closer to danger when every natural instinct would have told them to move away. As investigators now examine questions surrounding the building's safety measures, licensing status and fire preparedness, the focus will understandably remain on accountability. Authorities have launched inquiries and difficult questions are being asked about how such a devastating tragedy could occur. Those investigations are necessary and important, but alongside the search for answers, another story deserves to be remembered, because while fire exposed failures, it also revealed something remarkable about the people who witnessed it. In one of the darkest moments for the city, ordinary Delhi residents became the first responders. Shopkeepers became rescuers, neighbors became lifelines, passers-by became heroes. They used ropes, mattresses, ladders, bare hands and sheer determination to save complete strangers. For the families mourning loved ones, the pain of this tragedy will endure long after the headlines fade. Yet among the stories of loss are stories of courage that deserve equal remembrance. Stories of people who risked their own lives for others. Stories of split-second decisions that save lives. Stories that remind us that in moments of crisis, heroism often arrives long before official help. And perhaps that is what will ultimately define the Malviya Nagar fire. Not only the devastating questions it has left behind, but also the extraordinary humanity that emerged from the smoke. I am being joined by Mohammed Wasim Khan. He is an eyewitness. He contacted the owner after the fire broke out and they spoke for 26 seconds. He alleges that Bajaj came to the spot but left without helping those trapped inside. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने इस इस्टेब्लिशमेंट, इस बिल्डिंग के जो ओनर है उनसे बात की, क्या कहा उन्होंने आपसे? मैंने उनको फोन किया था 852 पर ये सूचना देने के लिए कि आपकी होटल में जो आग लगी है। पर जब मैंने उनसे बातचीत की, 26 सेकंड की मेरी उनसे बातचीत, उसमें उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मेरी जानकारी में आग लगी है। तो मैंने उनसे कहा कि आग जो बड़े घातक रूप में है और लोगों की जान बचना मुश्किल है, आप मौके पे आइए। तो मेरे फोन करने के 10 मिनट बाद वो मौके पर आए भी थे और यहाँ थे भी। उसके बाद जो वो यहाँ से चले गए। जी हाँ, और मुझे ये भी बताइए, काफी सारी रिपोर्ट्स, आई विटनेस अकाउंट्स बता रहे हैं आप उस मोमेंट पे वहाँ पे प्रेजेंट थे जब ये आग लगी और आग फैली। काफी सारे जो लोग थे वहाँ पे एकत्रित हुए, इस फायर को विटनेस कर रहे थे, काफी सारों ने हेल्प की। एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल निकल के आती है, वहां पे एक जो गद्दे की दुकान थी, जो उस गद्दे की दुकान के ओनर थे, उन्होंने अपने वो जो मैट्रेसेस थे, वो जो गद्दे थे, वो जमीन पर बिछाए ताकि जो लोग जो जंप कर रहे थे, कूद रहे थे बिल्डिंग से अपनी जान बचाने के लिए, वो एटलीस्ट बच जाएं, उनकी लैंडिंग सॉफ्ट हो। उसके बारे में कुछ बताइए। ये इलाका जो है, या ज्यादातर जो किराएदारी के लोग रहते हैं, 8:30 बजे जब हमें जानकारी ये मिली कि बराबर में जो फ्लोरिस स्टे होटल है उसमें आग लगी हुई है, तो हम जो वहां भागे हुए गए, मैं था, 2-4 लोग और थे जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी के साथ जो वहां पर जो हम पहुंचे, तो हम ही में से कॉल कर जो गद्दे जो मंगाए गए थे इनसे, ये इनकी सामने दुकान है जो उस टाइम पर बंद थी, पर इनके गोडाउन से जो हमने ही लड़के बेच के जो गद्दे मंगवाए थे, उससे पहले एक महिला जो आखिरी फ्लोर से इस होटल की सीधा सड़क पर कूद चुकी थी। जब हमने देखा कि लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूदने के लिए तैयार है, तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ हमें इंतजाम करने पड़ेंगे। तो हमने गद्दे मंगाए और हमने जो सीढ़ियों का इंतजाम किया, हमने जो रस्सियों का इंतजाम किया कि किसी भी तरीके से जो लोग जो खिड़कियों से बाहर झांक रहे हैं, जो खिड़कियां भी बड़ी जो संकरी थी, 3x1.5 की जो खिड़कियां थी वेंटिलेशन के जो रूप में दे रखी थी इस होटल में, वो 3x1.5 की थी। तो हम ही लोगों ने जो आगे बढ़ के, हम 8:30 बजे जब मौके पर हमने पहुंचे, जब आग जो बढ़ रही थी, मेरे ही माध्यम से जो एम्बुलेंस को कॉल किया गया, 14 मरतबा जो मैंने ही फायर ब्रिगेड्स को कॉल की, जबकि फायर ब्रिगेड्स का स्टेशन और पुलिस कॉलोनी की दूरी जो जहां पर ये घटना हुई है, वहां से मात्र 5 मिनट की दूरी है। अगर बहुत ज्यादा डिले भी होगा तो 6 मिनट हद से जो लगेंगे, उसके बावजूद जो फायर ब्रिगेड्स को आने में अच्छा खासा टाइम लगा। जी आपने ये जो बहुत ब्रेवरी का काम किया, बहुत ही करेजियस एफर्ट के साथ आपने लोगों को एकत्रित किया, इसकी हम दाद देते हैं। और मुझे ये भी बताइए कि आप कितने लोगों को बचा पाए? आपने कहा कि आपने ये जो रस्सियों का प्रबंध किया,
सीढ़ियों का प्रबंध किया, मैट्रेसेस का प्रबंध किया, गद्दों का प्रबंध किया? मैं आपको सही बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हम लोग जो रेस्क्यू के काम में लगे हुए थे, पर हमारे माध्यम से जो लगभग 15 से 16 लोगों को जो रेस्क्यू किया गया था। बाकी जो इस होटल में जो थर्ड और फोर्थ फ्लोर पर जो लोग ज्यादा फंसे हुए थे, और नीचे बेसमेंट में, तो बेसमेंट का जो शटर था वो इन्होंने जो लॉक कर रखा था, अंदर की तरफ से उसका रास्ता जो ये इस्तेमाल करते थे, तो वहां से लोगों को निकालना असंभव था तीसरे और चौथे फ्लोर से। तो जितने भी लोग थे सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पे, उन्हें खिड़कियों के माध्यम से या सामने की फ्रंट की ग्रिल तोड़ के जो हमने जो 15 से 16 लोगों को निकालने का जो हमने यहाँ से काम किया, जो विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं, 4 से 5 लोग थे जो फ्रंट की तरफ से ही जो कूदे थे, वो गद्दों पे कूदे थे। जी बिल्कुल। आपने कहा कि आपने एम्बुलेंस को बुलाया, आपने फायर टेंडर्स को बुलाया, आपने 14 बार फायर टेंडर्स को कॉल किया, जिसके बाद फायर टेंडर्स पहुंचे। क्या लगता है इतनी देरी का क्या रीजन होगा? देखिए, इसका रीजन तो भली बाती जो वही बता पाएंगे कि क्या रीजन रहे। हम तो ये कहेंगे कि सरकारी महकमों में जो इस तरह का विलंब होना आम है, वो किसी भी तरीके का विभाग हो, उनके लिए कोई भी कॉल जो प्रायोरिटी नहीं होती, अगर वो प्रायोरिटी समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे, तो इतने बड़े हादसे ना हो और लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंची होती। जी, मोहम्मद वासिम खान, आप बहुत ही वाजिब बात करते हैं। आपका जो करेज है, आपकी ब्रेवरी है, वो एक मिसाल है, और आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने जितनी मेहनत की, जितना टाइमली वहाँ पर एक डिसीजन लिया, जितने लोगों को आपने एकत्रित किया वहाँ पर, कुछ लोगों की जान बच सकी, और उसका पूरा श्रेय आपको जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Right, so that was one of the several stories of courage, of bravery, of humanity that brought these people together, including Wasim Khan, who we were speaking to. He spoke about how they were able to gather these resources, bring people together to save lives, as many as they possibly could. They tried to call the fire tenders as well. They were not responsive. That's the unfortunate part of the entire situation. But the humanity did triumph this time around as well, to save lives, to save people. Unfortunately, not more could be saved. On that note, I slip into a short break. Thanks for watching.